Kautali, in last class we have already discussed about the qualitative and quantitative methods of social research. So quantitative methods are used in social sciences uh, when the necessary, relevant, and um, expected result, expected superior result is expected. We use quantitative research in social sciences. So that means here to have a relevant and expected superior result, to get this, to get a relevant and a superior expected result, that quantitative methods are used in social sciences. So that's why it has a special advantage in using this. But at the same time, we should not avoid using this only due to lack of information or apprehension that it is very difficult to understand. So no doubt quantitative method are a little bit difficult to understand, but on that ground, we simply should not avoid the use of quantitative method in social science research. Okay. So however, so quantitative research has special relevance in social science research, and it is exceptionally useful when the researcher want relevant and expected better result. Hmm. So under this chapter, under this block, we have four chapters that is we have to discuss. So the first chapter is that is sampling method and estimation of sample size. Sampling. Last class रे ମୁଁ sampling विषय गोटे जगह उल्लेख करथिली. So in different methods of data collection न जो different methods सब अछि ता भितरु sampling is one of the important method and easier method. So drawing a proper sample does not constant result and conclusions. So sampling is a method, but sample refers to the unit. Sample refers to a unit drawn from the whole population. Drawn from the whole population. It's total population, and the process of collecting sample is known as the sampling. Do you follow my point? So sampling is the method. The process of collecting samples are known as sampling. But sample refers to a unit that is selectively chosen from a population as the representative of the whole group. So sample sample is a representative of the group or representative of the population. So that's why it is representative when it is not possible. There are the two prakar method अछि. गोटे होची census method और गोटे होची sampling method. Census method और sampling method. So census method कहले when a large population is conducted for collection of data, we call it census method. हमें सेटा को census method बोली कहो. But when some representative of the whole population is selected for collection of data, then it is called as a sampling method. So sampling is a more easier method, less time consuming. It's an advantage. Sampling method has its own advantage, but census method has its own advantage as well as disadvantage. So sampling method advantage or disadvantage अछि. Sampling method are easy, less money, time, material is used in sampling. It's a good advantage. But disadvantage of sampling is it has reached the conclusion from a fewer number of cases. Fewer number of cases conclusion generalization reach करा जाए जोटा may not provide valid result. It's a disadvantage. So sampling method or sampling method tells us how to work out a sample, how to select a sample. केमिति गोटे sample selection करिवा that is important in the method of sampling method. So sampling help us to arrive at a subset of the universe of your research.
यूनिवर्स कहले कोन यूनिवर्स कहले हम जो एरिया डाटा कलेक्शन करिवु सेटा को रिसर्च रे यूनिवर्स बा पॉपुलेशन बोली कहा जाय तो यूनिवर्स और पॉपुलेशन होची द एरिया फ्रॉम व्हिच द रिसर्चर कलेक्ट डाटा ना सेटा कहा जाय तेनु एटा कोन करे सैंपलिंग हमकु माने गोटे सबसेट ऑफ द यूनिवर्स रा प्रदान करे रे साहाय्य करे कि सैंपलिंग it gives a representative of the unit. So sample is a subset of population that it is a subset or a representative of the population that represents the entire group. That represents the entire group. When the population became too large and it is almost impossible to contact each and every respondent for collection of data. So at that moment, the researcher collects select sampling method. से समय researcher sampling method करे, है ना? कहीं अनेक लोगों पे कोठा पे costly है वो, it is impossible, more time, money, material, employed दरकार पड़ेगा, ये सब रखे आप हैं sampling became the easier. So samples are carefully chosen. Sample is carefully a small carefully chosen unit. Sample ta kono a small carefully chosen unit. Even it is extracted from the population or universe to represent the whole. समुदाय to represent करिया पे इटा करा जाय. तेनु a well selected sample provides better result. So the sample selection ta सठिक है, then it will provide good result. ताले इटा भलो result प्रदान करो. If sample collection is defective, then it may give may not give the better result. Better result दे पाना. Census method then sampling method बुझे. So then let us discuss about the different methods of sampling. है ना? तो यूनिवर्स और पॉपुलेशन कौन बुझला? यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिसर्च रे कहले हमें बुझू द एरिया फ्रॉम व्हिच डाटा आर कलेक्टेड, है ना? द रिसर्च एरिया. द पॉपुलेशन is an aggregate of individuals possessing a common traits, है ना? जो मंगर गोटे कॉमन लक्षण थिबा ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ डाटा कलेक्शन करे तब हम पॉपुलेशन बोली कहता है. तो सैंपलिंग classification of sampling or types of sampling method. There are different types of sampling researchers have to use during the collection of data. Sampling methods normally classified into two, that is probability and non-probability. এটা দুইটা ভাবে আমরা বলবো সম্ভাবনা probability সম্ভাব্য sampling কইলে কোন নমুনা probability or non-probability sampling. If the purpose of research is to draw conclusions or make predictions affecting the population as a whole, then we use probability sampling. In case we use probability sampling methods. जते बड़े the purpose research रा purpose बा लक्ष्य थिबो कोन to draw conclusions and or make predictions affecting the whole population of the universe. Then we use in that case we use probability sampling. So probability sampling, if in a probability sample each member of the population has a known non-zero probability of being selected. Our basic jinx probability sampling, it is random selection. Random selection माध्यम रे probability sampling करा जाए. एवं probability sampling रे गोटे advantage होची एथिरे you can error can be calculated. Errors in a probability sampling can be calculated, and it is which a sample might differ from the population. Which is the degree to which a sample might differ from the population. There are different methods of probability sampling. Probability method
रे केते गुडे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रही सेगुडा कहूँ कौन आमर रैंडम सैंपलिंग सिस्टमैटिक सैंपलिंग स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग एगुड़ाक दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एगुड़ाक सब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भितर आसीबो है ना रैंडम सैंपलिंग स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग सिस्टमैटिक सैंपलिंग एगुड़ा सब प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपलिंग कौन ना इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सैंपल सबुठु उत्तम फॉर्म रो विशुद्ध कहले बेसिकली रैंडम सैंपलिंग की बुझाए केमती ऑर्डिनरली आमे देखुतु जेतेबेले लॉटरी पड़े आमे पुळे लॉटरी टिकट पड़े आदर गोटे को सिलेक्ट करबा दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ए रैंडम सैंपलिंग सो इट इज रैंडमली सिलेक्टेड आमे किछि कोनो जहा हाथ पुरे देलु जहार गोटे उठे आनु दैट इज रैंडमली सिलेक्टेड सेटा को रैंडम सैंपलिंग बोली कहू एंड हियर एवरी ईच एंड एवरी small sheets of paper has the chances of being chosen सेही केस रे आमे गोळे गाळी दउ जहा को उठे उठे सेठी जे कोनसी गोटे को उठेबार चांस अछि संभावना अछि प्रोबेबिलिटी अछि so that's why random sampling is the purest form of probability sampling है ना and every member of that unit have the equal chance of being selected सेथिरे तले आमे हाथ गोळे देकरी गोटे कागज को टेके आनु सेथिरे प्रत्येक मेंबर रो गोटे चांस थाए सिलेक्ट हबार random each and every item of the universe has to be identified एठी प्रत्येक रो गोटे सेपरेट आइडेंटिफिकेशन अछि प्रत्येक जो टुकड़ा कागज ताको आमे अलग अलग आइडेंटिफाई करबो हां तेनो एटा रैंडम सिलेक्शन इज इफेक्टिव इन ए क्लियरली डिफाइंड पॉपुलेशन हां and it is self contained small and self contained एक केस रे रैंडम सैंपलिंग में यूज होबो नो दैट आउ अधिक हले स्मॉल केस रे वेरी लार्ज होबो ताल रैंडम सैंपलिंग सेठी यूज करि होबो नाही है ना तेनु सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहले कोन एटा को मतलब बेले बेले कुहा जाए दैट नाइन्थ नेम सिलेक्शन nth n इंग्लिश में जो n अछि nth some name selection बोली मतलब कोजा टेक्निक एटा को फॉलो करा जाए when after the required sample size has been calculated every nth record is selected from a list of population member and this process is called as a systematic sampling it is frequently used to select a specified number of records from a computer file ଗୋଟେ computer file ରୁ ଗୋଟେ selected a specified number of records because specified number को select करबा मते होती ए सिस्टमैटिक सैंपलिंग का गोटे उदाहरण तापरे स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग स्ट्रैटिफिकेशन यू नो स्तरीकृत नमूना स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग एठी कोन होए ना इट इज कॉमनली यूज्ड प्रोबेबिलिटी एटा साधारण भाबे एटा बेसी मते यूज होए रैंडम सैंपलिंग परे एटा मते निष्पन्न में अधिक यूज होय it is commonly used probability method है ना it is a superior to random sample to it टिके superior कहेंगे ना it reduces the sampling error random sampling रे जो sampling error रा possibility अधिक थाए किंतु stratified sampling रे से sampling error रा possibility टिके decline करे तेनु सेति पई एटा टिके ताटू बेटर बोली कि कोआ जाए एक स्ट्रैटम गोटे स्ट्राटा माने गोटे यूनिट को विभिन्न स्ट्राटा रे यूज करी सपोज एग्जांपल हमें गोटे पॉपुलेशन अछि तादरु डाटा कलेक्शन करबा गोटे क्लास रे हमें डाटा कलेक्शन करबा केमति करबा ना गोटे क्लास रे जते पिला अछि ताको हम एज अनुसार गोटे कैटेगरी करबा नंबर बेसिस रे गोटे कैटेगरी करबा कलर बेसिस रे गोटे करबा एमति विभिन्न स्ट्राटा रे डिवाइड करी कि हमें जते क्षेत्र सैंपल ड्रा करबा सेटा को हमें स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग बोली कहबा है ना here each stratum is a subset of the population प्रत्येक strata ta it is a subset of a population that share at least one common characteristic एवं प्रत्येक गोटे common characteristic जेम हम कहले समस्त गोटे एज रो गोटे ग्रुप रे हेबे समस्त गोटे एका फर्स्ट क्लास वाइज पिला गोटे कैटेगरी हेबे so these are the subset of a population that share at least one common characteristic तांका भीतर गोटे common characteristics थिबो stratified sampling रा जते यूनिट है ना तो ए स्ट्रैटा मेल फीमेल भी पारे गोटे क्लास रे मेल फीमेल एज सेक्स एमती विभिन्न व्यक्ति रे हमें देखो सिलेक्शन कर पारा सैंपलिंग तापर आउ बिसाइड्स दिस थ्री देयर आर सम आल्सो
some other types of samples, that is cluster random sampling. Cluster random sampling. I would extra type probability sampling with cluster koile kono na this kind of sampling, cluster sampling method is useful when population of a research category is scattered across a wider area. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଶର ପପୁଲେସନ ଯୋଉକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସ୍କାଟରଲି ରହୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇ କେସରେ ଆମେ ଏଇ ମେଥଡକୁ ୟୁଜ କରିବା କ୍ଲଷ୍ଟର ପପୁଲେସନ ସ୍କାଟର ଭାବେ ଲୋକ ବିଛାଡିକି ରହିଥିବେ ସପୋଜ ଦିସ୍ ମେଥଡ allows to divide the population into clusters and then select clusters and random population एई population रे जेते लोक अछंती ताको छोट छोट क्लस्टर रे डिवाइड करबा एवं तापर सेई क्लस्टर भितरु केतेटा क्लस्टर को रैंडमली सिलेक्ट करबा ये होची हमें क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग क्लस्टर माने कोन गोटे ग्रुप गोटे छोट ग्रुप रे करबा हैना करिकि ताको सिलेक्शन करबा ताहले ताको कुआ जिवो क्लस्टर सैंपलिंग क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग मेथड see जो cluster है one can either study all the members of the selected cluster or again take a random samples of these sample clusters ये जो sample selection हला सेतु समस्त को हम डाटा कलेक्शन करि पारु बा तांका भितर पुणी किछि लोक को सिलेक्ट करिकि हम मदन डाटा कलेक्शन करि पारु है सो ए केस रे ए जो विभिन्न स्टेज रे हमें तांको करबा तेनु सेटा को को जाय मल्टी स्टेज सैंपलिंग यदि पुणी तम कैटेगराइज करी तांको टू डाटा करसु ताको मल्टी स्टेज बा बहु स्तरीय सैंपलिंग बा नमूना बोले कि हमें कहते है ना सो दीज आर दी फोर टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग दैट इज रैंडम सैंपलिंग स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग सिस्टम सैंपलिंग और क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग दीज आर द फोर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग besides there are certain non probability sampling मु कहतली members are selected from the population in some non random manner the degree to which the sample differs from the population remain unknown. This method includes convenience sampling. Non-probability sampling the भिन्न प्रकार सब अछि convenience sampling, judgment sampling, quota sampling, snowball sampling. These are the different types of non-probability sampling. Then probability sampling रा opposite होउची कोन एटा होची non-probability sampling. When one researcher is interested in exploring how a small group or a representative group is doing for purposes of illustration or explanation, से केस रे हमें non probability sampling यूज करबा exploring माने केमती for the purposes of illustration or explanation गोटे ग्रुप को सिलेक्ट करबा से केस रे हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को व्यवहार कर सेटा को नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोली कहा जाए तो नॉन प्रोबेबिलिटी ए जो पूरा कहला कोन ना स्नोबॉल कन्वीनियंस जजमेंट और कोटा सैंपलिंग सो कन्वीनियंस सैंपलिंग is used in exploratory research केस रे कन्वीनियंस सैंपलिंग यूज करा जाए and the investigator is interested in getting an inexpensive approximation of the facts. Under convenience sampling, the sample is selected because it is convenient to select. एथि जगु एटा को सिलेक्ट कर जाए है ना तब एटा मध्य एक्सीडेंटल हे पारे खापाजाड़ हे पारे तेनु the use of volunteers is an example of convenience sampling. Then judgment sampling. Judgment sampling when the researcher select the sample basing on judgment. गोटे judgment बा विचार करी जदि गोटे काहू सिलेक्ट कला an extension of convenience sampling. एटा होची convenience sampling गोटे extension. जेतबे गोटे researcher may decide to draw entire sample from one representative village. Judgment करा ना मु देखली एते हलानी मु गोटे गारू सब नेबी तार जजमेंट रिसर्चर जजमेंट तेनु जजमेंट भितरे से ताकू सैंपल सिलेक्शन करथारु एटा को हमें जजमेंट सैंपलिंग बोली को देन पर्पसिव सैंपलिंग under this sampling method the researcher targets a group of people believed to be special or typical or picked by some
यूनिक पर्पज एक स्पेसिफिक पर्पज के यही सैंपल गुड़ा को सिलेक्शन ताको हमें पर्पजिव सैंपल बोली कहबा फॉर एग्जांपल जदि हमें सपोज गोटे क्लास रे आसी जे तमे सर को कुआ गला जे तुम क्लास रे भलो पिला मानन को बाछिकरी तुमे पठाओ तने करासे तेनु टीचर कोन करिवे एटी पर्पजली भलो पिला गुडा को देखि बाछि पठेबे है ना तेनु गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य रखी जेतेबेले गोटे रिसर्च टारगेट ग्रुप को है ना से माने टिपिकल एवरेज बा स्पेशली पिक अप करा गला उदि निर्दिष्ट लक्ष्य रखी सेटा को हमें पर्पजिव सैंपल बोली कहि परिबा देन कॉल इट एज पर्पजिव सैंपल देन कोटा सैंपलिंग सो कोटा सैंपलिंग कहले कोन ना it is also another non probability sampling category आछि like stratified sampling here the researcher first identify the strata and their proportion in the population strata का परिबो एवं तार population में तार proportion बा अनुपात को अगर डिसाइड करिवो ताले से प्रकार को हमें कोटा सैंपलिंग बोली कहि परिबा then snowball sampling कहले कोन ना snowball sampling होची गोटे स्पेशल नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड यूज्ड when the desired sample is characteristic of is rare it relies on referrals from initial subject to generate additional subject the referral हिसाब रे यूज करा जाय this kind of sampling comprises identification of respondent who in turn refer researches to other respondent हमें तांको करिया से माने आउ दल को सिलेक्ट करबे ए बेसिस रे स्नोबॉल माने ई बॉल ताको दी पास करबा सी ताको दी पास करबा ई बढ़िया आइडेंटिफाई रेस्पोंडेंट हु इन टर्न रेफर रिसर्चेस टू अदर रेस्पोंडेंट्स ए प्रकार हेले हम देखो स्नोबॉल सैंपलिंग बोली कहबा तेनो इटा हला सैंपलिंग साइज कोन हवा दरकार व्हाट इज सैंपल साइज sample size दिबा पूर्व रुमा कहछि sample is always small in size sample लो केतरो फीचर अछि कोन ना small in size and it is useful in statistical calculations मते कोटा सैंपलिंग ता आउथरे बुझे देबे कोटा सैंपलिंग होछि एटा गोटा की प्रकार सैंपलिंग कहलो कोटा सैंपलिंग ता की प्रकार सैंपलिंग एटा कोन प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी एटा होची गोटे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कोटा सैंपलिंग इज ए टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है ना एटा प्राय स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग बोलिया समान कोटा सैंपलिंग इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग एठी कोन स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग बोली एठी कोन करे रिसर्चर फर्स्ट आइडेंटिफाई द स्ट्रैटा and their proportion in the population suppose ame gote population amara gote gaar population ame study kariba सेठी ame identify strata kole suppose जाति ता को ame सेठी गोटे strata हिसाब रे लेले कास्ट सेठी ame गोटे एरो चारिटा कास्ट देखले ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य ना तेनो ame फर्स्ट आइडेंटिफाई strata आइडेंटिफाई कले कोन ना कास्ट strata है ना एवं तांकर proportion in the population एवं सेही गार विलेज पॉपुलेशन रे ए कास्ट रो जाति मानकर प्रोपोर्शन बा अनुपात केते अछि है ना देन हमें जजमेंट विचार करबा टू सिलेक्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम ईच स्ट्रैटा तेनु प्रति स्ट्रैटा ए जो चारिटा जाति रहले प्रति जाति कैटेगरी रु हमें केते लेखा सैंपल लबा सेटा हमें डिसाइड करबा रिसर्चर डिसाइड करबो ता सुविधा अनुसार बा ता जजमेंट अनुसार ता विचार अनुसार बिल्कुल नहीं तेणु यही भाव निजर विचार बा आवश्यकता अनुसार गवेषक स्थिर करुवा गोटे सैंपल यूनिट को हमें कोटा सैंपलिंग बोली कहू तमे क्लियर उर्मिला आज्ञा सर हां तेणु कोटा एठी कोन कला रिसर्चर माने गोटे जाति स्ट्राटा स्थिर कला तेणु से स्ट्राटा भितर एक निर्दिष्ट प्रोपोर्शन अनुपातर लोकन को से डाटा कलेक्शन तांको गोटे स्पेसिफिक ग्रुप रो लोकन थारु डाटा कलेक्शन बा सेटा को हमें कोटा सैंपलिंग बोली
कोटा माने गोटे स्मॉल ग्रुप आ कोन सिलेक्ट कर ता इच्छा अनुसार किछि क्राइटेरिया नहीं तार इच्छा हला विचार कला ई रु एति काम कलेक्शन हैला ता कन्वीनियंस अनुसार है एटा को हमें कोटा सैंपलिंग बोली कहू बुझ परले then sample size sample size सबरे कहितली the sample must be small in size kana जदि sample large हबो ताले sample इन आ किछि माने रहइबनी एटा सेंसस मेथड हेइबो तो sample must be माने small in size it must be flexible it and use of purpose is sampling dealing with the non probability ओटा सब हमें non probability केस रे यूज करबा एवं probability केस रे मते यूज करबा then choice of a sample size of a particular research or survey involves many considerations. Sample size ता केते हबो एटा अनेक गुडे विचार अनेक गुडे फैक्टर को कंसीडर करिकि we have to taken into account a number of factor into consideration in order to choose the sample size. Sample size कोन हबो ताकू नै कि हमको केते गुडे विचार करियाको पड़ेबो हला कहेंगे मैं सैंपल मैन पावर आम पाखे केते मैन पावर अछि गोटे सैंपल पर यूनिट केते खर्च हबो फंड केते अवेलेबल कोन कोन पैरामीटर अछि ताको एस्टिमेट करा जो ए सब को हिसाब को नै हमें सैंपल साइज करबा केते सैंपल लबा न अदरवाइज हमर रिसर्च फिक्स हे परिबो नै तापर साइज ऑफ यूनिवर्स बा पॉपुलेशन साइज आकार केते सेटा मध्ये सैंपल साइज रे डिपेंड करबो तेनु सैंपल साइज आउ केते का फैक्टर मध्ये डिपेंड करे द कॉन्फिडेंस लिमिट सेट अप फॉर इन एस्टिमेशन देन हेटेरोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन गोटे जनसंख्यार भिन्नता विविधता हेटेरोजेनिटी देन फ्रीक्वेंसी और प्रोपोर्शन ऑफ एट्रिब्यूट्स टू बी एग्जामिन्ड कौन कौन प्रोपोर्शन एट्रिब्यूट लक्षण सब तुम एग्जामिन करबो ए सब गुडा को मध्ये इन्फ्लुएंस करे सैंपल साइज की आउ कोन कहबो ना सैंपल साइज ता मध्ये डिफर करबो फॉर टू द पर्पस ऑफ अंडर इन्वेस्टिगेशन को पर्पस रे तमे इन्वेस्टिगेशन करूछ से अनुसार सैंपल साइज डिफर करबो है ना द पर्पस ऑफ रिसर्चर कोन रिसर्च पर्पस रखी रिसर्चर ए डाटा कलेक्शन करूची से अनुसार तार सैंपल साइज मध्ये डिफर हो है ना तो ए गुडा को सब डिटरमिन फैक्टर जहा के डिटरमाइन करे सैंपल साइज को तेणु विभिन्न प्रकार रिसर्च विभिन्न आवश्यकता ये सब को डिसाइड करी सैंपल साइज केरा हो देन हमें वी हैव टू डिस्कस अबाउट the next chapter आदरो आ कुछ पचरेर अछि एनी क्वेश्चन सर मोर गोटे क्वेश्चन अछि सर आपण जो पढ़िले जजमेंट सैंपलिंग और पर्पसिव सैंपलिंग सर जजमेंट सैंपलिंग रे से सैंपलिंग ता बेस्ड है रिसर्चर रो जजमेंट ऊपर जजमेंट सिकर जजमेंट हो केते केस रे से निजे विचार करबो जे केते सैंपल से नबो ता सुविधा अनुसार ता कन्वीनियंस करे हाँ सर आउ पर्पसिव सैंपलिंग रे भी से गोटे माने निजर जजमेंट ही यूज कला तो मोर माने ओवरलैप करि जाउत दीटा स्टेटमेंट जजमेंट यूज कला किंतु विथ ए पर्पस सेठी जजमेंट रे किछि पर्पस नथिबो से तार कन्वीनियंस रे नबो बुझि परछो बोले पर्पस और कन्वीनियंस आ भीतर गोटे डिफरेंस है ना पर कन्वीनियंस अछि तार रिसर्च कथा ई सब विभिन्न फैक्टर होछि तार कन्वीनियंस किंतु पर्पस होछि गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य रखि से सिलेक्ट करबो गोटे ग्रुप करछ नै तो किछि सम पर्पस विल व्यू से सिलेक्ट कर सेठी किंतु ता सुविधा अनुसार पूरा तार सुविधा होता फैक्टर को बुझ परछ नै सेठी पई से दुटा डिफरेंस जजमेंट और पर्पस आ भीतर लिटिल बिट डिफरेंस होछि जदियो से दुटा ताका लागू छी अपियर टू बी वेरी क्लोज ओके सो ताले बायसिंग माने निज हिसाब रे बायसिंग करला जजमेंट ना पर्पस टा संगलो सो बायस्ड निज थॉट ऊपर बायस्ड कोटा रहला जजमेंट ना पर्पस जजमेंट टा बेसी बायस हबो केना जजमेंट रो किछि तार से ता सुविधा अनुसार हैला इट विल बी मोर बायस किंतु पर्पस इफ तो लक्ष्य में तो नै छी इट मे नॉट बी एडा बायस हवार चांसेस ता तुलना रे कम पर्पस नेले भी बायस हबो देयर इज पॉसिबिलिटी
It is also a kind of bias. है ना? Okay. Any other question by anyone? Okay, thank you. So Normal. go to the next. Poonam ko, any question? I'm not audible. Please, Poonam. Again, repeat again. I can't listen you. Poonam? Your voice is not clear. Please repeat. Snowball sampling. Snowball sampling कहले एटा गोटे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. Snowball sampling is a एठी कोन होची कि एठी snowball sampling टा relies on the referral from initial subject to generate additional subject. माने गोटे referral हिसाब रे. Suppose तुमको मु कहली जे तुमे मो बहिडा पढ़ा सोशियोलॉजी रा प्रफुल्ल कुमार जेना को बही पढ़ा. तो तुम्हें तुम सान भौणी तो नेक्स्ट पीजी कला तुम्हें तो कहला नहीं प्रफुल्ल सर को बही पढ़ा. सो रेफर कल तुमको रेफर कली तुम्हें तुम भौणी को रेफर कल पुणी तुम भौणी तार सांग को रेफर कला. एई केस रे जते बेले एई भली भाबे सिलेक्शन करा जाए सैंपल टा सेते बेले हम को स्नोबॉल सैम्पलिंग बोली कहू. उदाहरण स्वरूप मु कहली जे हमर को पिलां को नबा फर्स्ट ईयर पिलां को एई पिलां को नबा. तो तापर सी फर्स्ट ईयर पिला कहबा नहीं सर हमर सी पिलाटा को ग्रुप रखंतु. एई भली भाबे जो सिलेक्शन टा करा जाए ताकू स्नोबॉल सैम्पलिंग बोली कहू. बॉल माने जणे जणा पाकू बॉल गडे दोसी सी आ जणा पाकू गडे इतमें ताकू स्नोबॉल सैम्पलिंग बोली कहू. हां हां बुझिला त कहले एटा रेफरल माने रेफरल. हां रेफर टू अनदर. तो तापर सेही रेफरल बेसिस रे हम ताकू सिलेक्शन करू है ना. से बेसिस रे हम ताकू सिलेक्शन करू से को हम रेफरल स्नोबॉल सैम्पलिंग बोली कहू. ओके. आगे. Then we come to the next, that is measures of central tendency. Measures of central tendency. So measures of central tendency, এটা গোটে কোন না application এটা basically it require application of mathematics or statistics. Measures of central tendency, sampling technique পরে I want to discuss measuring central tendency and its application. Research रे central tendency रा use और application केमती ताकू will discuss under this chapter. Central tendency, measure of central tendency रे basically you know there are mean, media, mode, and then these are considered as the central measures of central tendency. It is a science of statistics, you know, it is a science of average. And here, so mean, media, and mode are the three major measures of central tendency, and that how these measures of central tendency can be used in social research. सामाजिक गवेषणा क्षेत्र रे हम ताकू केमती यूज करिबा. Mean कहले तमे कोन जानि छ? Already know that mean is the most common and widely used measure of central tendency. Very common hela mean method. Mean, media, mode जोड़ा में कहूँ. So mean हला गोटे common method of central tendency, and here each observation in a population may be referred करा जाए, है ना. So mean is the most familiar and useful measure used to describe the central tendency average of a distribution of score for any group of individual or object or event. So mean होची गोटे used to describe a central tendency average. Central tendency average of a distribution of scores. Distribution of scores of individual, group or object or event. ये बड़े जाब. तेणु एटा होची गोटे central tendency average को describe करिया पाई गोटे distribution score रो को हमें mean बोले की कहि जाऊ ना.
there are different formulas by which mean is calculated. जोटा तुम जानि छ ताको देखिबो सेटा मैथमेटिकल फार्मूला ताको बय देखि तुम कैलकुलेशन कर जानि परिबो m is equal to mean is equal to sigma x1 plus n है ना एटी कोन होची m होची mean बा सैंपल एवं x होची द x1 होची द स्कोर and n होची द टोटल नंबर accordingly on that basis we can calculate mean से बेसिस रे हम mean टाइप कैलकुलेशन करबा है ना कैलकुलेशन ऑफ mean न पुनी डिफरेंट फार्मूला अछि तार ग्रुप डाटा गोटे अछि आ गोटे होची शॉर्टकट मेथड भी अछि है ना ग्रुप डाटा मेथड शॉर्टकट मेथड अछि mean रो सिमिलरली मीडियन होची कोन ये मध्ये होची गोटे स्कोर दैट डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू हाफ्स the बंटन गोटे डिस्ट्रीब्यूशन को अधारे डिवाइड माने विभाजित कर दबो half of the scores are above the median and the other half is below it एटा को गोटे मीडियन को जाय जोटा मीडियम माने मीडियम जोटा मजी बोले को हम साधारणतः मीडियन इज आल्सो रेफर्ड टू एज द स्कोर एट द 50th percentile in the distribution गोटे एटा प्राय मजी रे रहे 15th central percentile in a distribution ना 50% जगह रे इटा प्लेस हेतियो तेनु एटा को मीडियन बोली को जाय मध्यमा भी केतर कहती बोली को जाय तेनु कैलकुलेशन ऑफ मीडियन केमति हबो ऑन ग्रुप डाटा आ ग्रुप डाटा केमति दी प्रकार फार्मूला तार अछि कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम ऑन ग्रुप डाटा आ रोजी कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम द ग्रुप डाटा अरेंज द सीरीज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर जो ऑन ग्रुप डाटा रे तमे आगो ताको न्यूमेरिकल ऑर्डर संख्या सानरु बड़ क्रमे आगो अरेंज करिवो असेंडिंग करि पारो डिसेंडिंग करि पारो सानरु बड़ बा बड़रु सान उभय को आगो ताको अरेंज करिवो इन न्यूमेरिकल ऑर्डर जोटा करि पारो असेंडिंग करि पारो सानरु बड़ आडको बा डिसेंडिंग करि पारो बड़रु सान आडको देन फाइंड द मीडियन लोकेशन ऑफ n नंबर बाय द फार्मूला n+1/2 n+1/2 एमती करके तार फार्मूला कैलकुलेशन कर पारे देन व्हेन n इज एन इवन नंबर say 12 then media is half between 6 and 7 है ना सपोज जतो गोटे n नंबर गोटे हला 10 हला तारे 5 6 भीतर तार मीडियन नंबर ता रहबो है ना एटा हला सिंपल ऑन ग्रुप डाटा रे तार करा गला देन तापर सेमती ग्रुप डाटा रे मध्ये यू कैन कलेक्ट मीडियन नंबर तेनु गोटे कथा होची मीडियन मूल कथा कोन ना 50 परसेंटाइल ले एटा रहइबो 50 परसेंटाइल ले एटा रहइबो बा मिजारो सेटो मोड बोली कोआ मीडियन बोली कोआ जाय देन मोड होची मोस्ट कॉमन स्कोर इन ए डिस्ट्रीब्यूशन मोड ता होची इज ए नंबर दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट और कॉमन स्कोर इन ए डिस्ट्रीब्यूशन ताकू कहता है मोड इट इज ए point or it is the value that correspond to the highest point on the distribution गोटे बंटन रो हाईएस्ट पॉइंट को ये रेफर करियो हाईएस्ट पॉइंट वैल्यू को एटा मोड बोली कहा जाय है ना the highest point value that correspond to the highest point in a distribution is known as mode एटा को मोड बोली कहा जाय तेनु सेमति मोड मध्ये दुजा भाग रे कैलकुलेट हबो से ग्रुप डाटा और अन ग्रुप डाटा तार फार्मूला मध्ये जे अछि यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम द बुक्स है ना ताको जी तेनु देयर इज ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन दीस थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज बीन मीडिया एंड मोड they related to each other and calculated by using the equation given the equation ready ताको हमें कैलकुलेशन करबा the values of mean mode and median are same when the frequency is normally distributed जेतले frequency ता normally distributed हेतिबो सेते बेले तांका तिनटाकर value same हो frequency is normally distributed but their value differ when the frequency is positively or negatively skewed सकारात्मक भाव स्क्यूड हेता हो बा नकारात्मक भाव स्क्यूड हेतो सेते बेले तांकर value ता डिफर हो किंतु जेतले normally समान थिबे नॉर्मली एइतिबे सेते बेले सेटा समान फ्रीक्वेंसी ता नॉर्मली भाबे डिस्ट्रीब्यूटेड हेतिबो सेते बेले तांकर वैल्यूज ता समान सेटी होची तांका भितरे संपर्क रिलेशन में हिस्ट्री तेनु अच्छा यूजेस
मीन मोडिया मोड रो विभिन्न प्रकार यूजेस अछि आमे केते बेले गोटे काहेकि को प्रकार सेंट्रल टेंडेंसी का चूज करबा as per a requirement whether we choose mean media or mode तार केते को कोन अछि ना एडवांटेज अछि प्रति मेथड रो ता निजस्व एडवांटेज अछि हैं when the scores in a distribution are more or less systematically grouped about a central point, in that case we may use mean. से केस रे हमें mean व्यवहार कर परिबा अब गुड कर परिबा ना when the research problem requires a major central tendency that will also form the basis of other statistics of variability, then से केस रे मतलब हमें mean की यूज कर परिबा है ना when the interval level of a ratio level data providing the distribution of scores approximate a normal curve से कैसे मतलब हमें mean की यूज कर परिबा to measure the central tendency in a sample of observations when one needs to estimate the value of a corresponding mean in that case we can also use the mean. Similarly, media can be used in certain cases when the research problem calls for knowledge of the exact midpoint of a distribution. जेतने गोटे डिस्ट्रीब्यूशन एक्जाक्ट मिड पॉइंट को रिक्वायर करिवो नॉलेज मिड पॉइंट नॉलेज रिक्वायर करिवो से केस रे हमें मीडिया यूज कर मीडियन को यूज कर in other cases रे when extreme scores as they distort the mean but not the median से केस रे हमें मतलब को यूज करी पारिबा सेमि मोड कोड यूज करबा ना when all that required is a quick and appropriate way of determining central tendency. So, quick and appropriate way of determining central tendency थिबो से केस रे हमें मोड यूज कर परिबा it is ई बळे आबे हमें they have their specific uses संगर specific uses अछि को केस रे हमें को प्रकार मेजर सेंट्रल टेंडेंसी नबा केते बळे मीन दरकार करबा केते मोडियन नबा केते मोड नबा so this is what is about measures of central tendency. Then another statistical things that we have to study in this next chapter is that is required in research is the measures of dispersion and variability. Measures of dispersion and variability. Besides requiring the necessity of studying measures of central tendency, it is desirable to have a measure of dispersion of data. खाली जे हमें मेजर सेंस जानी गले हम रिसर्च विषय रे बसी जानी करबा से कथा नुहे हम ता सहित मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ऑफ डाटा को मतलब जानिबा दरकार ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी मेजर ऑफ डिस्पर्शन और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी जा करो is an indication of the clustering of measurement. It is the indication of a clustering of measurements around the center of the distribution. Around the center of a distribution. Or other words, it is an indication of how variable the measurement are. The measurement are and variable के vary करती है सेटा को हमें मतलब करें. Measures of dispersion is needed to evaluate the extent to which the average value depicts the data. केते परिमाण रे गोटे एवरेज वैल्यू डाटा को डिपिक्ट करती बा डिस्क्राइब करती है ना सेटा को इवैल्यूएट करिया पई हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज करू बुझल कि नहीं in what amount in what extent the average value depict the data केते परिमाण रे एवरेज वैल्यू डाटा को डिपिक्ट करती ताकू इवैल्यूएट करिया पई हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन व्यवहार करिथाउ clear how can we dispersion use karu the second purpose of using measures of dispersion is to find out the spread to improve or control the existing variation our jo existing variation achi taku improve kariba ba taku control kariba लक्ष्य रे मध्ये हमें dispersion taku use करू then range होची गोटे सीमा जा कहते the difference between the highest and the lowest measurement in a group data
is termed range. See now, the highest or lowest measurement बड़ एवं क्षुद्र मापक भितर डेटार गोटे ग्रुप ऑफ डाटा गोटे दले डेटा जिते हाईएस्ट और लोएस्ट भितर जो डिफरेंस थी हाईएस्ट डेटा और लोएस्ट डाटा भितर जो डिफरेंस थी सेटा को हमें रेंज बोली कहू रेंज बोली कहू जिते गोटे असेंडिंग ऑर्डर तलू एति डिफरेंस थो से उभय भितर जो गैपटा थी ताको हमें मेजरिंग रेंज बोली कहू हाईएस्ट और लोएस्ट भितर जो वेरिएशन ता तेणु रेंज होची गोटे क्रूड मेजर ऑफ डिस्पर्शन it take into account any measurement except the highest and the lowest. It range is a relatively crude measure of dispersion as it does not take into account any measurement except the highest and the lowest. It is useful in some circumstances. Range is useful subsequent to present the sample range as an estimate of the population range. Another is a mean deviation. Mean deviation कहले कौन? Since the mean is so useful a measure of central tendency. Mean टा गोटे होची सबुठु very common use of central tendency. सबुठु साधारण भावे व्यवहृत होतिबा central tendency रो mean होची गोटे very popular और common. One might express dispersion in terms of deviation from the mean. The mean deviation जने express करे dispersion सेटा को हमें mean deviation बोली कहू. On other words कहले the sum total of all deviations from the mean. Such a summation would be useless as a measure of dispersion. So mean deviation can also be defined by using the sum of the absolute deviations. Absolute deviation to use करी हमें mean deviation मध्य use कर करेगा rather than from the mean. Variance. Another variance method of tendency is variance. It is a eliminating the sign of deviations from the mean is to square the deviations. The sum of the square of deviation from the mean is called the sum of squares. Sum of squares. That is variance बोली कहा जाए. It is a method of eliminating the signs of deviations from the mean. है ना? ए द्वारा कौन signs of deviation from the mean को हमें eliminate कर परिवार द्वारा. The mean sum of square is called variance. The mean sum of square is called variance. बोली कहा जाए. तेणु variance होची as a square. The variance has a square unit. It expresses the same type of information as does the mean deviation. Mean deviation जो information express करे, ये variance मतलब सही को express करे. Same type of information को express करे. तेणु variance in gram square अब जितेबाला एटा cubic centimeter रे हमें ताको variance को express करबा. तेणु variance मध्य एटा होची eliminating the sign of deviations from the mean को व्यवहार करबा पई हमें variance को यूज करता हो. Then standard deviation and coefficient variation. Standard deviation is the positive square root of the variance. Standard deviation होची कोन? It is the positive square root of the variance. Hence, it has the same unit as the original measurement. एटा को केमती फार्मूला रे कैलकुलेशन कर परबो ना स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सैंपल वेरिएंस. Then coefficient variation
is the percentage ratio of standard deviation to mean. The percentage ratio of standard deviation to mean is called as coefficient variance. Is called as coefficient variance. Clear? Coefficient variance होची the percentage ratio of standard deviation to mean is called as coefficient variation. And this coefficient variation is calculated using the formula is equal to coefficient of variance is equal to standard deviation 100 by mean. এটা को हमें coefficient variance बोली कहला. Okay, so this is about the coefficient variance, range, and other things. Then the test of hypothesis. Hypothesis hypothesis आमे जानी आलोचना करी आगु पूर्व क्लास मानकरे hypo and thesis. Hypo means below or under, and thesis means a reasoned theory. So hypothesis has an important place in all kinds of social research. And the hypothesis is a tentative generalization. Hypothesis could define the hypothesis is a tentative generalization, the validity of which remains to be tested. Hypothesis is a tentative generalization, the validity of which remains to be tested. There are validity test and after it is tested, then it became a theory. A hypothesis ta ame kahinki guru eta hochi gote statistical inference. Hypothesis hochi gote statistical inference, and it uses the concept of probability in social research to explain the elements of uncertainty in decision making. Decision making रे जो uncertainty होची से केस रे आमे ताकू जानिया पई हमें भिन्न प्रकार पैरामीट्रिक टेस्ट करी ताऊ एवं एटा गोटे प्रकार हाइपोथेसिस होची टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस. Statistical inference uses the concept of probability to deal with the uncertainty in decision making. It refers to the process of selecting and using a sample statistics to draw inference about a population. The population विषय रे inference करिया पई एटा को हमें यूज करतो based on certain drawn sample. So statistical inference takes care of the two classes of problem. गोटे होची hypothesis testing और गोटे होची estimation. Hypothesis testing कोन it test some hypothesis about the population. गोटे some research population विषय रे तमे गोटे hypothesis नाला एवं सेटा को टेस्ट करिवो. Then estimate. Estimation में कोन estimation method uses the statistics obtained from the sample as an estimate of the unknown parameters of the population based on the drawn sample. So hypothesis testing ta me kemti kariba na there are certain 5 steps by which hypothesis testing may be done. The first is to formulate a hypothesis. Ago hypothesis ta formulate is the preliminary stage. Formulate गठन कले hypothesis हम ताको टेस्ट करिबा बा ताको प्रूव करिबा. तेणु hypothesis formulation is important. How to formulate a hypothesis about the गोटे research करिया पूर्व hypothesis formulation ता important. Then एटा गोटे एटा कोन कले कोन हबो ना गोटे हमें सेटअप करिबा गोटे population parameters. तापरे sample data collection करिबा. Related sample data collection करिबा एवं calculate करिबा एवं ता data को analysis tabulation सब करिबा. Then तापरे आसीबो decide an appropriate significant level. Testing hypothesis रो next step होची एटा to set up a suitable significance level to test the validity of this type. तार validity जे भाई गोटे significant rate. तापरे select a test criteria.
तापर गोटे सिलेक्ट टेस्ट क्राइटेरियन करबा सेट अप ए टेस्ट क्राइटेरियन एटा कोन ना appropriate probability distribution that can be applied is selected for the particular test, then carry out calculations तापर कोन करिया ना carry out calculations computation करिबा by the various statistical by using various statistical measures, then तापरे हमें decision नवा reach at the conclusion. These are the 5 steps following which we can test a hypothesis. Then chi-square test. Chi-square test is another statistical method. It is probably the most commonly used in all non-parametric tests. जैसे प्रकार नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अछि ता भितरु एटा होची सबटो important एवं यूज commonly यूज होय से केस रे एवं it is applicable when data are nominal and grouped in categories. जते बेले डेटा टा नॉमिनल हेतिबो एवं कैटेगोरीज हिसाब रे ग्रुप हेतिबो सेति बेले हमें एई प्रकार टेस्ट करबा chi square टेस्ट करा जायता है. These are about the different methods of data that is required to be calculation. Then the approach is correlation and regression. Correlation and regression. So in correlation, it is an analysis of covariance. It is a correlation is an analysis of covariance between two or more variables. Correlation helps to measure and express the quantitative relationship between two variables. Duita variable bhitere gote quantitative relations ku eta describe kare. It is the way of applying the tool. It shows the relevance of coefficient of correlation, coefficient of determination, and regression analysis in social science. Correlation correlation analysis of the covariance between two or more variables. When the relationship between two variables is quantitative, the statistical tool for measuring relationship and expressing it in a belief formula is known as correlation. That means correlation when the relationship between two variables variable is quantitative. The statistical tool for measuring relationship and expressing it in a brief formula is known as correlation. If a change in one variable results in a corresponding change in the other, the two variables are correlated. Setole amara research ra ame বিভিন্ন variable लो variable टाकु मध्य पुनी दी भाग व्यक्त करा जोटा मु काले कहउतली dependent variable और independent variable. तब जते बळे change in one variable brings result in brings corresponding change in the other variable, से केस रे हम दुटे जगह variable correlated बोली कहू. तेनु सेठी correlation अछि बोली कि हम जानि पारे. Then there are different types of correlation. Correlation दी प्रकार है. गोटे positive correlation or negative correlation, linear correlation and non-linear correlation. ये जो दुटा variable भीतर जो relation रहला से relation ता दुई प्रकार है पारे, positive है पारे, negative है पारे. If an increase in the value of one result on an average in a corresponding increase in the value of the other, and if the decrease in the value of one variable result in the decrease of the value of the other, then correlation is positive. जते बळे आर बडुतला बळे गोटे वैल्यू बढ़ला बळे और corresponding वैल्यू हबो अन्य वेरिएबल गोटे वेरिएबल वैल्यू इंक्रीज कला बळे अन्य वेरिएबल वैल्यू मध्ये इंक्रीज करथिबो बा गोटे वेरिएबल वैल्यू के डिक्रीज करथिबो से बळे अन्य वेरिएबल वैल्यू मध्ये डिक्रीज करथिबो से केस रे ताको हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोली कहबा. तन दुईटा वेरिएबल से रिलेशनशिप पॉजिटिव अछि. नेगेटिव केते बळे हबो ना व्हेन द कोरिलेशन negative सेटिक बळे हबो when if the variables deviate in the opposite direction.
এই ভ্যারিয়েবল গুড়িক অপোজিট ডিরেকশন যদি ডেভিएट କରୁଥିବେ তাহলে ଆମେ ତାକୁ ନେଗେଟିଭ କୋରିଲେସନ ବୋଲି କହିବା। ଯେତେବେଳେ increase in one value one variable on other result in decrease in another variable, ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ ଇନକ୍ରିଜ କଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭେରିଏବଲ ଡିକ୍ରିଜ କରୁଥିବ, ଗୋଟେ करे ଡିକ୍ରିଜ କଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବେଳେ ଇନକ୍ରିଜ କରୁଥିବ। ଏଇଟା ଯଦି ହେଲା ଅପୋଜିଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ତାକୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ କୋରିଲେସନ ବୋଲି କହିପାରିବା। पॉजिटिव ଆଉ नेगेटिव कोरिलेशन। सिमिलरली लिनियर ଆଉ नॉन लिनियर कोरिलेशन, लिनियर बा नॉन लिनियर कोरिलेशन बा कर्विलिनियर, नॉन लिनियर कोरिलेशन को हमें कर्विलिनियर कोरिलेशन ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। The correlation between two variables is said to be linear if the corresponding to a unit change in one variable there is a constant change in the other variable over the entire range of the values। यदि गोटाकरे यदि चेंज हला ताले सेटा यदि अन्यतरे corresponding change आणला entire range of value total ये ताहले हम ताको linear correlation बोली कहि परिबा। किंतु जब the relationship between the two variables is said to be non-linear or curvilinear केतेबेले ना if the corresponding to a unit change in one variable the other variable does not change at a constant but a fluctuating rate, केतेबेले हम ताको कर्विलिनियर बोली कहबा। एटी चेंज हो तो सिटी किसी चेंज हो तो बा जदि चेंज हो फ्लक्चुएटिंग रेट रे चेंज होतो ताले सेटा को हमें कर्विलिनियर बा नॉन लिनियर कोरिलेशन बोली कहबा। এবং calculation of correlation can be made by using actual mean, assumed mean and direct method। এই তিনটা মেথড রে আমি এটাକୁ ক্যালকুলেশন করা যাই পারে। assumed mean माध्यम रे, actual mean माध्यम रे आउ डायरेक्ट मेथड द्वारा हमें कोरिलेशन को कैलकुलेशन कर परिबा। तार डिफरेंट फार्मूला मध्ये अछि by which you can calculate this group data और ungroup data उभयटा को हमें कैलकुलेशन कर परिबा। देन रिग्रेशन होची कोन से मध्ये आउ गोटे प्रकार डाटा। The regression analysis is a method of estimating the value of a variable from the knowledge of one or more variable। गोटे वेरिएबल नॉलेज रु वैल्यू ऑफ अनदर वैल्यू को मेजर एस्टिमेट करबा को हमें रिग्रेशन बोली कि कहूचे। The variable that the researcher tries to estimate is called dependent variable। जो वेरिएबल टा को रिसर्चर एस्टिमेट करबा को चेष्टा करे सेटा को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाए। एवं जो वेरिएबल व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन ओनली यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन सेटा को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोली कहा जाए, जोटा कि केस रे यूज होता है। तेनो रिग्रेशन इन ए रिग्रेशन इक्वेशन देयर मे बी वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तेनो गोटे रिग्रेशन इक्वेशन ने गोटे बा एकाधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होय पारे बट देयर इज ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल। रिग्रेशन ने एकाधिक गोटे बा एकाधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होय पारे किंतु डिपेंडेंट वेरिएबल गोटे रहयो। डिपेंडेंट वेरिएबल कोन ना जो व्हिच डिपेंड ऑन अदर्स, इंडिपेंडेंट को व्हिच फ्री फ्रॉम द अदर्स, जेटा हम का पर डिपेंड करे नहीं निजर परिवर्तन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, with this we complete this block 5। any doubts, any questions? सर एग्जाम रे मैथमेटिकल इक्वेशन कैलकुलेशन आसबरे ए आसुन रिगार्डिंग मीन मीडियन एंड मीन मीडियम मोड जो आसो सिंपल ले आसीबो प्राय आसुनी केते गुडर बसे आसना रेयर केते जासे मीन मीडियम तो इजी मेथड द्वारा यदि माने आसिला भी तुमे कैन फॉलो टिके देखि देथिल तो कर पाइबो। देन अबाउट व्हाट अबाउट कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आसे नहीं तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थाउ जदि शॉर्ट फॉर्म रे किछि आसे तो शॉर्ट क्वेश्चन आसे नहीं कि 6 मार्क लगा सेथरे क्वेश्चन गुडा जदि आसी व्हाट इज रिग्रेशन, व्हाट इज कोरिलेशन, व्हाट इज मीन मीडियम मोड ए टाइप रो जदि आसे मैथमेटिकल फार्मूला हिसाब रे विशेष जाते नहीं। थैंक यू सर। Sir, I have a question. उनको Sir, ଆମର जो ଏବେ COVID-19 ଚାଲିଛି
ସେଥିରେ ଯୋଉ COVID-19 ଟା ତମର ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ରେ ଆମେ ଯାଇ ଖାଇବାରେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ପକେଇଦେଲ ସାର୍ ସିଷ୍ଟମ ସେ ଯୋଉ ସରି ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ଆନାଲିସିସ୍ ଯୋଉ ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ହଉଛି ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଯୋଉ ମେଥଡସ୍ ଗୁଡାକ ହଉଛି ମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ହଉଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବି ଅନଗୋଇଂ ଅଛି ସାର୍ ସେଗୁଡାକ ସାମ୍ପଲିଂ ମେଥଡସ୍ ନାଇଁ ସାମ୍ପଲିଂ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ ହେଲେ, ଏଇଟା ତ ସାମ୍ପଲିଂ ନୁହଁନ୍ତି, ଏଇଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କାହା କାହା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ସେ ଆସୁଛି ଯୋଉଠି ସେଠି ଏଠି ସାମ୍ପଲିଂ ନୁହଁ, ଏଠି ପୁରା ଯାହା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଅଛି ଏଇଟା ସେନ୍ସସ୍ ମେଥଡରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯିଏ ତା ସହିତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ କଭର କରିବେ, ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଅଣ୍ଡର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବେ, ସେଠି ସେନ୍ସସ୍ ମେଥଡ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ, ଏଠି ସାର୍ ସାମ୍ପଲିଂ। ଯୋଉ ହଁ ସାର୍ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ମେଥଡଟା ୟୁଜ୍ ହଉଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ନିଆ ହଉଛି ଆଉ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଯୋଉ ସେଇଟା କୋଉ ମେଥଡ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସୋସିଓଲୋଜି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖିବା ନାଇଁ ଯୋଉଟା ସେଇଟା କୋଉ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତ ସୁଯୋଗ, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଉପରେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟା ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ନାଇଁ ସେମାନେ ଏଇଟା ଅପସନାଲ, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସୋ ମଚ୍ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ନା ସେମାନେ ନିଜେ ଅପସନ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଛୁ ସମାଜ ସେବୀ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରନ୍ତି, ନିଜ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତି, so that ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ସେଟା। ସାର୍ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗୁଡାକ ୟୁଜ୍ ହଉଛି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କେତିକି ଆଫେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଯେ କେତେ ଆଫେକ୍ଟ ହେବେ ସେଥିରେ କିଛି ମେଥଡ ସେଥିରେ ଆମର ୟୁଜ୍ ହଉଛି। ସେଥିରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କେତେ ପସିବିଲିଟି ଅଛି, କେତେ ପିଲାଙ୍କର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେସରେ ଗୋଟେ ଥାଏ, ମେଡିକାଲ କେସରେ ସପୋଜ ଯେମିତି ଏଇ ଟାଇପ ର କେସରେ କେତେ ଫେସିଆଲ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଲା ଆଫ୍ଟର ୟୁଜ ଅଫ ସେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ନେଲା ପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲା ପରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଫେସିଆଲ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଲା, ତାର ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି ଯେ ଏତିକି କେସରେ ଲକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦିଟା କେସ୍ ବା 1% ବା 2% କେମିତି ହବ, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି। ସାର୍ ସେଇଟା କୋଉ ସାମ୍ପଲିଂ ଯଦି ସାମ୍ପଲିଂ କେସରେ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ସାମ୍ପଲିଂ ସେଟା ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଟର୍ମର କେସରେ ଅଲଗା, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କର ସେଟା ଅଲଗା, ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଟା ଅଲଗା, ହେଲା ଯଦିଓ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସାର୍ ଫଲୋ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସାର୍ ସେଥିରେ କିଛି ଆମର ମାନେ ସୋସାଇଟି ସହିତ କନେକ୍ସନ ନାହିଁ, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସୋସାଇଟି କି ଛାଡିକି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅଛି କୋଉଠି, ଆମର ମେଡିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ମେଡିକାଲ ୟେସ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ନା ତମେ ଜାଣିଛ ୟେସ୍ ଏବେ ମାନେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ସବୁ ଖୋଲିଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଆମର ଏଠି ସିନା ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଖୋଲିଲାଣି, ଆମର ଏସସିବି ବି ରହିଲାଣି ମେଡିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଓକେ ସୋସିଆଲ ସାଇକିଆଟ୍ରି, ମେଡିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ଏ ସବୁ କମ୍ବାଇନ ହେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି। ସେ ହଁ ସେ ଯଦି ସେଇଟା ଆମେ କନସିଡର କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ମାନେ ସୋସିଓଲୋଜି ସହିତ କଣ କନେକ୍ସନ ରହୁଛି, ଯେତିକି ଏବେ ଇଭେଣ୍ଟସ ଚାଲିଛି ହଁ ତାକୁ ତାର ଯଦି ପୁରା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତାର ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ପାର୍ଟ, ଆମର ଯେତେ କମ୍ୟୁନିକେବଲ ଡିଜିଜେସ୍ ସବୁ ଅଛି ସେ ଆଜ୍ଞା କେସରେ ସେ ସବୁର ରିସର୍ଚ୍ଚ କେସରେ ସେମାନେ ଦେ ଟେକ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ସୋସିଓଲୋଜି to collect the data, ଆମର ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡିସିନ, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡିସିନ ବୋଲି ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମେଡିକାଲ ତାପରେ ଏସପିଏମ୍, ସୋସିଆଲି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେଡିସିନ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ବା ତାକୁ କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡିସିନ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଲ୍ ୱିଥ ଦିସ୍ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ୟେସ୍ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। Thank you. Thank you, Thank sir. you. Let us wind up. Any questions by anyone? No, sir. Thank you. Let us Thank leave. Eh?